हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्रैक एंड सिट। आज हम करने वाला है टीचिंग एप्टीट्यूड का यूनिट 6 सोशल साइंसेस। सो इसमें क्या क्या है, आगे चलते हैं। लेट्स टेक ए लुक एट द सब टॉपिक्स। फर्स्ट वी हैव बेस्ड ऑन डिफिकल्टीज दैट चिल्ड्रन फेस इन सोशल साइंसेस। एज आई हैव टोल्ड बिफोर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी सब्जेक्ट्स। ठीक है, हमने लैंग्वेज के बारे में भी बात किया था और मैथ्स के बारे में भी बात किया था। यूनिट 4 में हमने वो डिस्कैलकुली और इसके बारे में एक्चुअली बढ़ चुका है। और सेकंड आ रहा है डिटेल्स ऑफ सब्जेक्ट्स बीइंग टॉट। ओके, दिस इज द थिंग वी आर गोइंग टू गिव मोर इम्पोर्टेंस टुडे। ठीक है, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट्स है और थोड़ा थियरी भी आ रहा है, बट इसमें गेट्स इट्स लॉजिकल, ज्यादा मेमोरी बेस्ड नहीं है, लेकिन तुमको पता होना चाहिए। बट इट्स इजी, डोंट मिस दिस गाइस। हमारा थर्ड सब टॉपिक है नोबेल एंड अदर अवार्ड विनर्स फॉर क्रिएटिंग नॉलेज सच एज इन इकोनॉमिक्स और अदर फील्ड्स। ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैंने अभी तक प्रीवियस ईयर में इससे क्वेश्चंस नहीं देखा। फिर भी ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस लाइक इस साल क्वेश्चंस आ सकता है। ठीक है, एंड इन दी फोर्थ सब टॉपिक वी हैव टीचर्स इन हिस्ट्री, लाइक बुद्धा, जैन, कंस्ट्रक्शन ऑफ टीचर्स इन उपनिषद। ठीक है, ये बुद्धा का बारे में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था। ठीक है, सो दिस इज द टॉपिक एंड गाइस, इससे हमको 12 to 16 मार्क्स आने वाला है। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड दिस इज आल्सो वेरी इजी। सो लेट्स गो टू दी let's go to a question first, then we can get a more idea about what we can expect. And of course we are going to, as I told before, we are going to focus more on this subtopic in this video. Okay, so let's go guys. The first question, this is a previous year question. In this question, the question is, in the school curriculum, the study of social science starts at the, what options we have? uh, Elementary stage, middle stage, secondary stage, and senior secondary stage. ठीक है, these are our options. So इसके बारे में मुझे थोड़ा थियरी बोलना चाहता है, क्योंकि this is very important in this teaching aptitude and this applies to other topics also. ठीक है, so what is this concept of elementary stage, middle stage, secondary stage and senior secondary stage? मुझे पता है, लाइक हम सबको पता है, बिकॉज वी हैव बीन थ्रू दिस सिस्टम ऑफ एजुकेशन, बट स्टिल वी हैव टू गेट ए प्रॉपर, लाइक वी हैव टू हैव ए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस काइंड ऑफ डिफरेंशिएशंस. ठीक है, सो लेट्स गो गाइस, लेट मी एक्सप्लेन. फर्स्ट व्हाट वी हैव एलिमेंटरी स्टेज. ठीक है, वी हैव एलिमेंटरी स्टेज. देन व्हाट वी हैव मिडिल स्टेज. ठीक है, वी हैव मिडिल स्टेज. Then what we have secondary stage. Secondary stage. Then we have higher secondary stage, higher or senior secondary stage. ठीक है ना, secondary stage. So which class divisions are coming under each of these sessions? That is our question, right? So in elementary education 1 to 5, in middle education 5 to 8, in secondary education 9 to 10, in senior secondary education 11 to 12. ठीक है, so these are our class divisions. But guys, still there is one important thing. ठीक है, actually as some of you guys know, NTA have published a new syllabus for teaching aptitude for the first time, but they have cancelled it. But still NEP 2020 was a separate topic over there, and I am kind of predicting one question from, like I'm kind of expecting one question from NAP 2020 in this paper. Why? Because it's important. And this is an old structure. Okay, this is a structure we have been following for a long time, but now it's changed. But it's not implemented in a right way, but still now we are talking about some other model. ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा बात कर सकता है. So trust me guys, give some attention because this is important and it's easy. I hope you got this idea because this is what all of we have gone through, right? So yeah, आगे चलता है. We are talking about NEP 2020. ठीक है, so guys, till now we were having this 10 plus 2 system, right? है ना, हम सबको पता है +1 +2 ऐसा सिस्टम था, 1 to 10, then
+1 +2 ऐसा था हमारा एजुकेशन सिस्टम, लेकिन अभी थोड़ा चेंज आ रहा है एंड नाउ वी आर हैविंग 5 + 3 + 3 + 4 system. This is not implemented, but this is what is advised by NEP 2020 and this is important. ठीक है, it's not completely connected to this unit, but I am telling you because one question can come from this area, because then I thought like let's discuss this in this chapter only. ठीक है, so this is our new system and these age groups are 3 to 5, मतलब ये 5 साल है ना पहला वाला, इसमें 3 to 8 years आ रहा है. ठीक है, then here it is 8 to 11, here it is 11 to 14, here it is 14 to 18, 18 मतलब तेरा +2 हो गया. ठीक है, so this is our class division in this kind of new system. ठीक है, इसमें क्या क्या स्टेजेस है हमने पहले से बात किया था. हमारा पहले सिस्टम में भी 4 स्टेजेस है. ठीक है ना, एलिमेंट्री, मिडिल, सेकेंडरी एंड सीनियर और हायर सेकेंडरी. वो मिडिल सेशन के वाले में हम ये भी लाइक समटाइम्स वी टेल दैट दिस इज एलिमेंट्री एज प्राइमरी. ठीक है, प्राइमरी और लोअर प्राइमरी एंड दिस स्टेज इज समटाइम नोन एज प्राइमरी. ठीक है, ये पहले वाला हम वी यूज्ड टू कॉल इट लाइक दिस आल्सो. ठीक है, so here we have 4 divisions. In this NEP 2020 also we are having 4 divisions. लेकिन थोड़ा डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंस है. क्या क्या है, हमारा पहले सेशन में फाउंडेशन. ठीक है, इसमें इट विल बी ऑफ 5 years फ्रॉम एज 3 to 8. इट विल इनक्लूड ग्रेड फर्स्ट एंड सेकंड. ठीक है, सो इसमें बहुत डिफरेंस है गाइस. क्या है, लाइक व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस? डिफरेंस इज here it's starting from 3 according to NEP 2020. This is a potential question guys, don't forget. According to NEP 2020 schooling will start from the age of 3. ठीक है, पहले क्या था, before this it was schooling was starting at the age of 6. अभी चेंज हो चुका है. ठीक है, this is very important, भूलना मत. ठीक है, so in the second session we have preparatory stage. ठीक है, वो नाम्स भी लाइक चेंज हो गया है इसलिए मैं थोड़ा एम्फोसिस कर रहा हूँ. ठीक है, सेकंड वन इज प्रिपरेटरी स्टेज. इट विल बी ऑफ 3 years फ्रॉम द एज 8 to 11 years. इट विल इंक्लूड ग्रेड थर्ड टू फिफ्थ. ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. मुझे पता है ये थोड़ा ये भी थोड़ा मेमोरी बेस्ड है, लेकिन फिर भी ठीक है गाइस, क्योंकि इट्स वी कैन कनेक्ट विद दिस राइट. हम सब ये हमारा +2 हो चुका है हम सबका. ठीक है ना, so if you are going through this, if you are reading this on your own and if you are hearing my voice, you can remember this. इसलिए मैंने बोला कि ये पूरा मेमोरी बेस्ड नहीं है, थोड़ा लॉजिक भी डाल सकता है. ठीक है, सो या दैट्स इट. इसके बाद हमको क्या है, मिडिल स्टेज है. It will be of 3 years from the age 11 to 14 years. It will include 6 to 8. ठीक है, 6 to 8. Then we have secondary stage. ये middle stage हमको पहला सिस्टम में भी था, है ना. Here also we are having this. In this, instead of higher secondary, we are having secondary stage. Yeah, of course there will be some divisions like higher secondary and secondary. फिर भी we are talking about like we are talking about it in surface. ठीक है, so इसमें secondary stage में क्या क्या आ रहा है, it will be of 4 years. This is our this last year. इसमें we are having 14 to 18 years. It will include 9 to 9 12. Okay, so this is what we are having in our NEP 2020. Okay, this is important guys, don't forget, don't forget. I'm telling you again, the thing, the age in which schooling is starting is important, and that is a potential question. Don't forget about this. NEP, according to NEP 2020, schooling is starting from the age of 3. Okay, so yeah, that's it. Like the foundation stage is starting from the age of 3. ठीक है, I hope you got this idea and now we are moving forward. हमारा क्वेश्चन क्या था, हम कैसे ये सब शुरू किया, यही सवाल है. Let's go to the question again guys. The question is, in school curriculum the study of social science. Of course this unit is all about social science, तो हमको ये पढ़ना है. ठीक है, and actually these kind of questions are coming like frequently. ठीक है, so I understood that it's very important, it's very important to know the details of the subjects we are studying in every single classes.
this subject CBSE or like NCERT is providing. So ठीक है, and I am telling you guys, you can get at least 4 to 8 marks if you know how it works. This is very important. ठीक है, so हमको ये उसको थोड़ा सीरियस में देखना पड़ेगा. ठीक है, so we are going to that in which like what we are studying in different classes. ठीक है, so let's go to the first class guys. Let's go to class 1 again. ठीक है, maybe you guys thinking ये सब हमने पढ़ चुका है, अभी क्यों इसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन तुमको याद है. This is the question. If you have memory, it's very good. You can just put it put the video in 2x and just watch. Otherwise, you have to give some attention. ठीक है, this is important guys. As I told before, 1 to 2 questions will definitely confirm this area. ठीक है, in class first we are having subjects like English, mathematics, Hindi and Urdu. Okay, these are the subjects provided by the NCERT. This is an official website of NCERT. ठीक है, official website. You guys can also check it if you want for revision. NCERT. ठीक है, so these are the subjects we are having in class first grade. So now we just have moved to class third grade, right? Why? Because the grade second is also having the same subject. Class 1 and second. ठीक है, is having same subjects. So these are English, mathematics, Hindi and Urdu. ठीक है, so let's move forward. आगे चलता है. Now we are in class third. ठीक है, so in class third we are having grade 3 we are having mathematics, English, Hindi, the world around us. This is important guys. Previous year में भी क्वेश्चन आया था इसके बारे में. The world around us, this is important. Arts textbook भी आ रहा है, physical education and well-being भी आ रहा है. This is introduced in grade 3 और उर्दू भी आ रहा है. ठीक है, these are the subjects. So you just have to go through it slowly and you have to revise it and you can read it. This is the best way guys. Just see the lecture then you go yourself and read it. ये सब हमने प्रोवाइड करेगा, इससे भी हो सकता पढ़ सकता है और तुमको चाहिए तो वो ऑफिशियल वेबसाइट जाके भी पढ़ सकता है. ठीक है, देन वी आर गोइंग टू क्लास 4. ठीक है, क्लास 4 में क्या क्या है? मैथमेटिक्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, एनवायरमेंटल साइंस है, उर्दू है. ठीक है, तो अभी क्या चेंज हो गया? हमारा वर्ल्ड अराउंड अस चेंज हो गया, एनवायरमेंटल साइंस ईवीएस. ठीक है, हम सबको याद है ईवीएस बन चुका है ये सब. ठीक है, so this there is some difference in these two grades, so you have to give importance to that. Just go through this case, you will be getting the marks. ठीक है, and we are going to class like class 5th में भी सेम है, इसलिए मैंने क्लास 5th स्किप किया. क्लास 5th में भी सेम ही है. देन वी आर गोइंग टू क्लास 6. 6 में बहुत सारा सब्जेक्ट आ रहा है भाई. हिंदी आ रहा है, इंग्लिश आ रहा है, मैथमेटिक्स आ रहा है, सोशल साइंस आ रहा है, संस्कृत आ रहा है, साइंस आ रहा है, आर्ट्स आ रहा है, फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबीइंग आ रहा है, वोकेशनल एजुकेशन आ रहा है, उर्दू आ रहा है. ठीक है, सो गाइस हमारा क्वेश्चन क्या था? इन स्कूल करिकुलम द स्टडी ऑफ सोशल साइंस स्टार्ट्स एट द, यही हमारा क्वेश्चन है. हमने सोशल साइंस का बुक देखा हुआ है, कब देखा हुआ है? हमारा सोशल साइंस एज ए सेपरेट सब्जेक्ट कब स्टार्ट हो चुका है? क्लास 6th में. ठीक है, राइट, क्लास 6th में वी आर हैविंग सोशल साइंस एज ए डिफरेंट डिसिप्लिन, लाइक एज ए सेपरेट डिसिप्लिन. बट गाइस एक्चुअली यू कैन आल्सो से दैट ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है. क्यों? बिकॉज इन EVS also we are studying some concepts of social science. ठीक है, but we are not having it as a separate discipline. ठीक है, so ये किस स्टेज में आ रहा है? We have already discussed about this stage, ये middle stage. ठीक है, so yeah, that's it guys. इसलिए मैंने बोला इसमें हमको ध्यान देना ही पड़ेगा. ठीक है, सो वी आर इन क्लास 6th राइट नाउ. इसके बारे में और क्वेश्चंस भी आ रहा है, इसलिए मुझे ये पूरा 12th तक, ये हमको 12th तक करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो आगे चलता है. Okay guys, let's go to class 7th. Right, class 7th में क्या है? We have mathematics, we have science, we have English, we have Sanskrit, we have social science, we have Hindi and we have Urdu. ठीक है, kind of similar, right? Now let's go to class 8.
एट में भी हमको इंग्लिश आ रहा है, मैथ्स आ रहा है, हिंदी आ रहा है, साइंस आ रहा है, सोशल साइंस आ रहा है, संस्कृत आ रहा है, उर्दू भी आ रहा है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू क्लास 9। 9th में नया सब्जेक्ट भी आ रहा है, आईसीटी आ रहा है, राइट। आईसीटी पहली बार आ रहा है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन आ रहा है, वो हमको वो पहले क्लास में था ये सब्जेक्ट, ये फिर भी आ रहा है। उर्दू आ रहा है, सोशल साइंस आ रहा है, उर्दू उर्दू आ एक सेकेंड गाइस, ये पेन को क्या हो गया। हाँ, उर्दू आ रहा है, सोशल साइंस आ रहा है, साइंस आ रहा है, मैथमेटिक्स आ रहा है, संस्कृत आ रहा है, हिंदी आ रहा है, इंग्लिश भी आ रहा है। ठीक है, देन लेट्स गो टू ग्रेड 10। 10th में क्या क्या है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, हिंदी है, सोशल साइंस है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू भी है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन भी है, वो 9th में भी था। हमारा ये सब हो चुका है। नाउ वी आर गोइंग इनटू 11th 12th। You can relate more because you just have completed or going to complete your plus 1 plus 2, right? So let's go to 11th और grade 11th। 11th में क्या है, बहुत है भाई, right? संस्कृत है, अकाउंटेंसी है, दिस ऑल सब्जेक्ट्स गाइस, ऑल सब्जेक्ट्स, बट यू हैव टू गेट एन आइडिया अबाउट दिस बिकॉज इसके बारे में भी क्वेश्चंस आज आ गया है। We will discuss one previous year question right now, ठीक है, then you will get a more understanding about why it's important। ठीक है, अकाउंटेंसी है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, साइकोलॉजी है, जियोग्राफी है, फिजिक्स है, हिंदी है, सोशियोलॉजी है, इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज है, उर्दू है, होम साइंस। मे बी मेनी ऑफ यू गाइस हैवंट स्टडीड बट फिर भी होम साइंस जैसे सब्जेक्ट भी है हमारा एनसीईआरटी से वजह से, होम साइंस है वजह से, मतलब एनसीईआरटी इज आल्सो प्रोवाइडिंग दिस काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स। ठीक है, मेरा हिंदी पूरा अच्छा नहीं है गाइस, सॉरी फॉर दैट। एंड द नेक्स्ट थिंग इज क्रिएटिव राइटिंग एंड ट्रांसलेशन भी है, फाइन आर्ट्स है, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस है, कंप्यूटर साइंस है, सबको पता है, और हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है, बायोटेक्नोलॉजी भी है, संगीत है, नॉलेज ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सब ऑफर कर रहा है एनसीईआरटी 11th में। ठीक है, 12th में क्या क्या है, ऑफ कोर्स सिमिलर, संगीत है, बायोटेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस है, कंप्यूटर साइंस है, फाइन आर्ट्स है, क्रिएटिव राइटिंग एंड ट्रांसलेशन है, उर्दू है, होम साइंस है, बिजनेस स्टडीज है, दिस काइंड ऑफ सिमिलर टू प्लस वन, राइट गाइस, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ सिमिलर, राइट। एंड इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, केमिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इंग्लिश है बिल्कुल, और हिंदी भी है, संस्कृत है, अकाउंटेंसी है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, सब हो चुका है हमारा। और मे बी इफ यू हैव give if you gave more attention to this slide, maybe you guys are thinking that why I have put these marks, right? Sociology, and when I'm talking also I give more emphasis on this psychology and sociology and political science. Why? Because the thing is already a question आ चुका है, previous year में है ये question in the school system, disciplines like psychology, one second pen फिर भी हाँ ठीक है, in the school system disciplines like philosophy, sociology, psychology and anthropology are introduced during, anthropology के बारे में हमने नहीं पढ़ चुका है लेकिन फिर भी आ रहा है in different forms in textbooks। ठीक है, but here we are talking about as a different discipline। ठीक है, ये इसका the concepts of psychology is discussed in like before this higher secondary stage also, right? लेकिन इसमें it is introduced as a different subject, हमने देख चुका है guys सीनियर सेकेंडरी स्टेज में। लेट्स गो एंड गिव, लेट मी एक्सप्लेन। ये 12th का टेक्स्ट बुक है, इसमें हमको अलग से साइकोलॉजी दिया हुआ है, सोशियोलॉजी दिया हुआ है, पॉलिटिकल साइंस भी दिया हुआ है, सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी नहीं है हमारे पास। वो फिलोसफी है, साइकोलॉजी भी है, सोशियोलॉजी भी है, वो पॉलिटिकल साइंस नहीं है इधर। ठीक है, वो एंथ्रोपोलॉजी हमने नहीं देखा है लेकिन फिर भी इसका कॉन्सेप्ट आ रहा है, फिलोसफी भी आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज व्हाई आई टोल्ड यू गाइस इट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई होप यू गॉट एन आइडिया अबाउट, एंड इस तरीके से क्वेश्चंस आ भी सकता है। ठीक है, एंड आई एम रियली एक्सपेक्टिंग वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस एरिया, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट गाइस, एंड इफ यू नो दिस इज easy 4 marks, don't try to skip guys because many others will skip. As I told you before, if you are watching this video you are in an advantage because many of the guys who is writing NCET will be the those who is appearing for JE and NEET.
ठीक है, उसको पीसीएम में अच्छा मार्क्स आ सकता है, लेकिन इसमें कभी नहीं अच्छा मार्क्स आ सकता है। मैं भी पहले बोला था, आई वॉज ऑल्सो प्रिपेयर फॉर जेई, मैं टीचिंग एप्टीट्यूड में कुछ नहीं किया था, ठीक है, इसलिए मेरा मार्क्स लाइक थोड़ा कम हो गया। इससे ज्यादा मार्क्स ला सकता था, लेकिन मुझे पता नहीं था टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू गाइस दिस काइंड ऑफ टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट एंड दिस आर लाइक पोटेंशियल क्वेश्चंस। ठीक है, आगे चलते हैं। वी आर गोइंग टू वन मोर, क्या, वी आर गोइंग टू वन मोर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। As a subject at school, social science draws its content significantly from the. So I took this question to feel you guys relaxed. Why? Because till now we have talking about something, our old schools, like our school system and something theoretical, right? Now I want you guys to appreciate the beauty of this kind of questions, because it's kind of logic wells also, and everybody can answer this kind of questions, like some of these questions. ठीक है, so हमारे साथ क्या क्या है ऐसे, let me read again. Social science grows its content significantly from the significantly, ठीक है, ये भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि as I told before we have to find the best possible answers, ठीक है, best possible answers। तो हमारा ऑप्शंस क्या क्या है, डिसिप्लिन ऑफ हिस्ट्री है, डिसिप्लिन ऑफ जियोग्राफी है, डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, डिसिप्लिन ऑफ कॉमर्स है, डिसिप्लिन ऑफ मैथमेटिक्स है। सबको पता है mathematics is not like, it somehow it all the subjects are connected, but it's not connected to social science as it's going to connect with physics. Or we can also say that history is more connected with social science than mathematics, of course we all know that. So mathematics पहले काट सकता है। Actually guys, I forgot to add the other part of it, because this is having three answers, ठीक है, we are having like ABC, we are having AD, we are having लाइक ADB, ऐसा ऐसा ऑप्शंस था, चार ऑप्शंस। सो इसमें हमको तीन ऑप्शंस चूज करना है। नाउ वी आर मूविंग इनटू डिसिप्लिन ऑफ कॉमर्स। एक्चुअली इकोनॉमिक्स में कॉमर्स का थोड़ा कॉन्सेप्ट आ सकता है, लेकिन इट्स नॉट दैट फ्रीक्वेंट एंड इट्स नॉट दैट रिलेटेड एंड कनेक्टेड, ठीक है, इसलिए ये भी कर सकता है, आगे चल सकता है। एक्चुअली हमारा आंसर हो चुका है, लेकिन फिर भी हमको कंफर्म करना है ना। So discipline of political science, yeah, of course, it's relates with social science and it's a subset of social science, of course. So ये देखिए, discipline of geography, of course, it's related with social science। और क्या है, history, history है social science, like बहुत related है। तो क्या हमारा आंसर हो गया ABC, ऐसे ही हमारा आंसर हो गया। That's why I told you guys you can also get answers like this, logic based, थोड़ा दिमाग लाना पड़ेगा उस पे, बिल्कुल मिलेगा। और क्या, क्या। Now let's move into another question. This is also a simple one. ठीक है, we just have to think about our own experiences. The beauty of teaching aptitude is this, guys. Maybe one or two questions will come in a way that like you can answer that those questions by analyzing your own life, your own school days. ठीक है, yeah. So this question you can do like that. Here what we have is a match list question. States of schooling, nature of subjects in social science. ठीक है, and I told you guys in every match the list questions, not, it's not limited to teaching aptitude। I told you if you know one answer just go through these options, ठीक है, ऐसा करना है हमको, पूरा नहीं करना है। So let me give you an example। हमारे पास क्या क्या है, क्लास 3 to 5 है पहले, and in these options we are having social science as a choice based option। नहीं, वो बाद में आ रहा है, वो प्लस 1 प्लस 2 में आ रहा है ना, साइंस है, ह्यूमैनिटीज है, कॉमर्स है, सो बाद में आ रहा है, वो छोड़ दे अभी, हम सबको पता है। सो वी जस्ट नो दैट D इज इक्वल टू 1, ठीक है, हम सबको पता है D इज इक्वल टू 1। सो चेक करते हैं, अरे भाई एक ही आंसर है। सो हमारा आंसर हो चुका है, लेकिन फिर भी एवरी आंसर में हमको ये नहीं मिल सकता है, तो फिर भी हम स्ट्रक्चर्ड वे में भी देख लूंगा, because I want you to guys have more clarity, like crystal clear clarity। So next, like हमको इसका आंसर करना है, वो क्लास 3 to 5 में क्या क्या आ रहा है। पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक एज सेपरेट सब्जेक्ट नहीं, वो क्लास 3 में बहुत छोटा बच्चा है, उसमें क्या पढ़ाएगा पॉलिटिक्स साइंस एंड इकोनॉमिक्स एज सेपरेट सब्जेक्ट, कोई नहीं पढ़ाएगा ऐसे। देन वी हैव 9 to 10 में लाइक नो नो नो, देन वी हैव द वर्ल्ड अराउंड अस, सोशल साइंस एज ए स्कूल सब्जेक्ट। या गाइस, ये पढ़ के भी हमको बोल सकता है दिस इज वर्ल्ड अराउंड अस। यू कैन आल्सो से दिस बाय गोइंग थ्रू आवर प्रीवियस स्लाइड्स, है ना। हियर वी हैव डिस्कस, इधर नहीं है, क्लास फर्स्ट में नहीं है, इन क्लास 3 वी हैव दिस वर्ल्ड अराउंड अस टेक्स्ट बुक, राइट गाइस। सो दैट्स लाइक
दैट्स हाउ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम्स. सो 3 to 5 हमारा हो गया, ए हमारा हो गया क्या 3. सो ए 3. सो हमारे पास ये ए 3 का जो ऑप्शन है, लेकिन हमारा ऑलरेडी हमारा आंसर हो चुका है. तो जस्ट वी वांट टू चेक ये हमारा आंसर है, इसमें भी ये आ रहा है ए इज इक्वल टू 3. सो सी में क्या है, क्लास 9 to 10th. 9 to 10th में क्या आ रहा है, we have to check क्लास 9 to 10 में पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स क्लास सेपरेट सब्जेक्ट. या बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि प्रो यू डोंट हैव टू थिंक लाइक दिस आल्सो, क्योंकि हमारा ये पहले हो चुका है क्या, वो डी भी हमारा हो चुका है, बिकॉज वी हैव ओनली टू ऑप्शंस लेफ्ट. सो ज्यादा सोचने का भी बात नहीं है, वी हैव ओनली दिस सोशल साइंसेस है, लाइक ये सब ये भी हमारा हो गया है और ये भी हमारा हो गया है. ठीक है ना. सो वी हैव ओनली social science as a school subject and political science and economics as separate subjects. ठीक है. सो हम सबको पता है this will come after this, है ना, because this is introducing social science, this is more advanced because this is introducing political science and economics as separate subjects. ठीक है. How can you teach a student what is difference between economics and political science if he or she don't have the basics of social science? First we have to introduce the subjects, right? So हमको बोल सकता है ये क्लास 9 to 10 बच्चों को ये पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स का सेपरेट सब्जेक्ट. ठीक है. सो दिस सी इज इक्वल टू, ये भी सही है. तो क्या बाकी है, दिस क्लास टू 6 to 8, यही के बारे में हम बात कर रहा है ना. तो ये भी हो गया सोशल साइंस एज स्कूल सब्जेक्ट. ये भी टी के बी इज इक्वल टू 4. बट as you have all seen, this is very important guys, इसके बारे में उतना लोड नहीं लेना है. like we can even answer this from our own experiences. ठीक है ना, हम सब स्कूल में पढ़ चुका है, हमारा एक्सपीरियंस से ऐसा क्वेश्चंस कर सकता है. एंड आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट वन क्वेश्चन लाइक दिस आर इजी, डोंट स्किप दिस, गिव सम टाइम, यू विल बी डेफिनेटली गेटिंग. ठीक है. दिस इज व्हाट आई हैव टू से यू गाइस. And I also have to discuss something, as I told before, at the end of every video we will be talking about some strategies and tricks you can apply when while you are writing NCET 2025 exam. ठीक है. पहले पहले मैं ये बात कर रहा हूँ, लाइक आई हैव सीन सम कमेंट्स दैट वो अभी टीचिंग एप्टीट्यूड पूरा इंग्लिश में हो गया, थोड़ा दिक्कत है पढ़ने में. आई थिंक like what you guys think, I would love to know what you guys think about this language medium, because I have tried to improve my Hindi. ठीक है. Like I tried to include more Hindi in my videos. So मुझे तुम लोग कैसे फील कर रहा है, just comment if you guys are still not understanding. ठीक है. और हमको क्या कर सकता है. Now we have covered one subtopic of like I'm talking about this unit. Now we have covered only one subtopic. We will be doing the other topics in the coming videos. ठीक है. But this is very important and this is very easy. So I want all of you, everybody watching this video, to do these questions. ठीक है. So yeah, that's it guys. And I'm telling you, actually I'm also recording another video about this, but let me tell you, in NCET we are having PCM, then we are having language 1, language 2, teaching aptitude and GT. ठीक है. इसमें 25 मार्क्स आ रहा है, इसमें 25 मार्क्स, इसमें भी आ रहा है 25 मार्क्स, जीटी में भी 25 मार्क्स आ रहा है, टीचिंग एप्टीट्यूड 20, लैंग्वेज 20, लैंग्वेज अगेन another language is also 20. So just think guys, this is 75 and this is 60 plus 25 is equal to 85. Many of the students will be only able to solve this one PCM because maybe they are preparing for JE or NEET. I told about this in another videos also, but I want to emphasize on this with this the number distribution, because then you will be getting more idea about it. 75 questions. If we, in this GTTA language 1 and language 2 collectively you are having 85 questions guys, 85 questions. ठीक है. Why it's important? Like, still if they are studying for JE and NEET, still they can also answer this kind of questions, but not like you guys. You guys matlab the guys who is focusing on NCET. क्यों? Because you are having some background in these subjects, and trust me guys, you will be scoring more than them. ठीक है, if you are studying well. So this is a golden opportunity guys, don't miss this, because मैंने miss किया था, as I told many times.
तुमको ये नहीं करना है. So yeah, do this guys, score well, and like crack and sit with flying colors. ठीक है. So let me know in the comment section below what you guys think about this video, and is there is something I have to improve. मैं नेक्स्ट वीडियो से ट्राई करेगा इम्प्रूव करने के लिए. ठीक है. सो दैट्स ऑल गाइस, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करो, एंड या दैट्स इट. अगले वीडियो में देखो.